students, so I am Nitesh Saxena would like to explain the topic Wheatstone Bridge of class 12 chapter 3 current electricity. Okay, so Wheatstone Bridge is a combination of resistors which is used to determine the value of unknown resistance. This is the circuit diagram of Wheatstone Bridge. It consists of four resistors P, Q, R and S, so connected as to form a parallelogram. Across one diagonal, a galvanometer is connected along with a key, and across another diagonal AC, and cell is connected along with another key K2. Okay, so how will we able to find out the value of unknown resistance? यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस होंगे वो हमें नोन होंगे बेटा, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्थ रेजिस्टेंस. So from the positive terminal of the cell E, current I will flow. Current I will come to the node A, and at node A it will be split into two currents I1 and I2. Okay, current I दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, I1 and I2. Now, if the value of the four resistance are so adjusted that the galvanometer does not show any deflection, then we will say that the Wheatstone bridge is balanced. अगर इन चार रेजिस्टर्स की वैल्यू कुछ इस तरह एडजस्ट करती जाए कि मिडिल आर्म से PD से कोई करंट फ्लो ना हो, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पे रहे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, then the Wheatstone bridge is said to be balanced. Okay, and in that case what will be the condition for the balanced Wheatstone bridge? We need to write that condition. तो जब मिडिल आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं आ रही है तो जो करंट I1 B तक आएगी वही सेम करंट I1 BC आर्म में जाएगी थ्रू रजिस्टर Q, और करंट I2 जो रजिस्टर R के थ्रू पॉइंट D तक आएगी वही पूरी की पूरी करंट I2 विल फ्लो थ्रू S, और C पे फिर I1 प्लस I2 कंबाइन होके क्या बना देंगे I. करंट I ही ब्रेक हुआ था I1 और I2 में एट पॉइंट A, एंड करंट C I1 प्लस I2 विल अगेन कंबाइन टू फॉर्म द करंट I, will which return to the negative electrode of cell E. Now here we will apply KVL in two loops. We will take two loops. One loop is DABB and second loop is BCDB. We will apply KVL in the two loops to find out the condition for this Wheatstone bridge. So applying KVL in loop 1 first of all. I hope that everyone knows KVL. If anyone has any doubt in KVL, they can go through my previous video on this Kirchhoff's voltage law, in which I have discussed the Kirchhoff's laws. Okay, so applying KVL in loop 1, KVL states that the algebraic sum of voltage in any loop should be 0, or the algebraic sum of the EMF in any loop is equals to the sum of the product of the current and resistance in that loop. Sigma E is equals to sigma IR. तो लूप वन में आप देखें कोई भी EMF का सोर्स नहीं है, सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं P एंड R, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट. देयर आर टू रेजिस्टर्स I1P, I1 और लूप की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस लूप को अगर हम आगे बढ़ाएं तो I2 की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज नेगेटिव. I1P minus I2R is equals to 0, क्योंकि कोई EMF नहीं है तो इक्वल्स टू 0. Okay, or we can say I1P is equals to I2R. This is our equation 1. Similarly, applying KVL in loop 2. तो loop 2 में भी हम देखें तो दो रेजिस्टर्स हैं Q एंड S, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई EMF का सोर्स नहीं है, ठीक है. I1 की डायरेक्शन Q में और लूप की डायरेक्शन सेम है, so it will be taken as positive. I1Q माइनस लूप की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन रजिस्टर S में ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0, कोई EMF नहीं है, इज इक्वल्स टू 0. I1Q is equals to I2
S. This is our second equation. We'll divide both the equation first upon second. So I1P upon I1Q is equals to I2R upon I2S. I1 से I1 cancel out, I2 से I2 cancel out. P upon Q is equals to R upon S. This is the condition for a balanced Wheatstone bridge. When the galvanometer does not show any deflection and is at null point. Okay, so for a balanced Wheatstone bridge, the ratio of the resistance in the two arms should be equal to the ratio of the resistance in the other two arms. P upon Q should be equal to R upon S. P upon Q is equal to R upon S. The ratio of the resistance in two arms is equal to the ratio of the resistance in the remaining two arms. यहाँ पे P and Q को हम बोलते हैं known arms, sorry ratio arm. P and Q are known as the ratio arms. R is known as the known arm. इसका resistance पता होता है इसलिए इसको बोलते हैं known arm. AD is known as the known arm and CD is known as the unknown arm. Okay, so this is the condition for a balanced Wheatstone bridge. In case if you have any doubt or query in this topic, you can leave a comment to me in the comment box and share this video, like this video and subscribe to my channel Nitesh Saxena Classes NSC.